Namaskar. I am Dr. Krishna Poddar, Senior Pain and Spine Specialist. Today we'll talk on the trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia is the severe facial pain disease which occurs mostly in the female and mostly 50 years of age. Trigeminal neuralgia occurs due to the irritation or nerve disease of the trigeminal nerve. Trigeminal nerve has the three branches. The upper branch supply the eye, so mostly pain occur in the eye region. The middle branch supply the cheek and the lower branch supply the lower part of the face. This pain is severe electric like current like pain. It comes for a few seconds and goes, but it can be repeated. This pain is triggered by sometimes brushing, chewing, having water, even sometimes they can't talk by talking also. So these patients, they can't brush, they have the very bad mouth breath, they can't eat, so they become very weak and become very, very depressed. That's why this disease is called suicidal disease. How we diagnose? We normally diagnose by the clinical finding or the how patient describe the disease. There is no other such investigation. Only sometimes we order the MRI to see whether there is no other tumor or other problem of the nerve. And sometimes we get the vascular loop which compresses the trigeminal nerve. Now, how we treat? First, we prescribe the nerve disease medications which can sometimes control the disease and sometimes we have to increase the doses. By increasing the doses, some patient can't tolerate the medication or they become sedated, and some patient can develop the allergy also. So we treat it by the interventions also. There are three types of the intervention. First, radiofrequency ablation. Second, we do the balloon decompression where one balloon is inflated below the nerve for few seconds and then we take out. Here, this nerve irritation reduces. Third, by the gamma radiation knife. In all these three, the radiofrequency lesioning is the best treatment, very well tolerated by the patient, very, very less complication. Here, patient can go home the same day, can have the food after the intervention and he become the normal and he can lead the normal routine life without any pain. Now, you please hear from one of my patients which is having this problem since 2014 and he is fine now. Thank you. সাংঘাতিক ব্যথা হতো, পেন হতো, প্রচন্ড পেন, সাংঘাতিক মানে মারাত্মক ব্যথা হতো। ওষুধ খেয়েছি, ওষুধ খেয়ে কম হয়নি। ম্যাডাম ইনজেকশন দিয়েছে 2014 সালে। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি 14 সালে দিয়েছে, আবার 2018 দিয়েছে। ঠিক ছিলাম, আবার পেন উঠেছে, প্রচন্ড পেন। এবারে ওষুধ খেয়েছি, এবার এখানে বেশি সাংঘাতিক চোখে। এবার ম্যাডাম ইনজেকশন দিয়েছে, এখন আমি ভালো আছি। मेरा नाम सोनम है, मेरी एज 34 है। मुझे आज से कम 7-8 साल पहले ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का प्रॉब्लम हुआ था। मुझे बहुत दर्द होता था, दवाई लेती ठीक हो जाता, कंटिन्यू दवाई लेते लेते भी मुझे दर्द आ जाता था, बहुत दर्द होता था। उसके बाद में तो मेरी दवाइयाँ भी मेरे पे काम करना बंद कर गई। फिर मैं मैम के पास आई तो मैम ने मेरा यहाँ पर RF का प्रोग्रामिंग सेट किया। उसके बाद में 2 साल हो गया मुझे, अभी तक मुझे कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है। सब कुछ ठीक है। पहले जब मुझे दर्द होता था तो ऐसा था कि मैं हिल भी नहीं सकती हूँ, बट अब मेरा सब कुछ एकदम नॉर्मल लाइफ चल रहा है। और RF से कोई आपको प्रॉब्लम हुई? नहीं, RF से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। इवन अब तो मेरी पूरी मेडिसिन भी बंद है। RF कराने के बाद से मैंने पूरा मेडिसिन बंद कर दिया। आज आप क्यों आए मैडम के पास? आज मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ तो मेरी दीदी को कुछ प्रॉब्लम था तो उनको लेकर मैं मैम के पास आई। थैंक यू।